Yes, good evening, all of you. So let us see the next concept from this chapter, that is electromagnetic induction. Actually, last lecture में हमने already study किया था कि whenever the EMF or a cell is connected to the series combination of inductor and resistor, then we already seen the equations and also solved them and understood that at that initial instant the current remains zero. Okay, current is hold for some time, or for the initial instant at least, and the current becomes infinity after infinite time. But in case of an ideal inductor which doesn't contain any resistance, but in case when the resistance is there, the final current is maximum current in the circuit flowing here is actually going to be the E naught upon R, where E naught is going to be the actually the EMF of the cell, and R is going to be the resistance, which is the only opposition after infinite time. Okay, and the relationship between this is obtained already. तो ये E naught equal to EL plus ER, ये इक्वेशन यूज करके हमने पूरा उसको सॉल्व करके लास्ट में जो डिराइव किया था, तो 3 इक्वेशंस हमको मिले थे ऑलरेडी, देख सकते हो आराम से. तो सबसे पहले इक्वेशन हमारा मिला था करंट का. सो द करंट इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट is given by this formula I naught into 1 minus e raised to minus RL by L into T, and EMF across the or voltage across the resistance is actually obtained to be E naught into 1 minus of R by L into T, and also the inductor as a EMF across inductor is also obtained to be simply E naught into e raised to minus R by L into T. Okay. So all these things we have already discussed in last lecture. So now let us discuss about the RL time constant. See here in this circuit which contains an DC source connected in series combination of an inductor and a resistor here. We have already proved that the current at any instant is given by the formula I naught into 1 minus e raised to minus R by L into T, correct? So this is the equation for current in general, and even the equation for the ER, that is the resistance, if you just see, it is also equal to E naught into 1 minus the same factor, that is e raised to minus R by L into T. And finally, we already seen the EMF across the inductor is also going to be actually equal to E naught times e raised to minus R by T into L, R by L into T actually. Yes, okay. So these are the equations, and if you just see the graphical variations of all these three, then we can just understand here that if you just plot the graph of current with time, okay, current का जो graph अगर draw किया with respect to time, यहाँ पे x axis पे हमने suppose time डाल दिया और y axis पे suppose current अगर डाल दिया, तो the graph will actually be like a increasing one. Okay, it will be actually increasing like this, because just see, if you just put t equal to 0 in this case here, then this whole factor will become 1 actually, and e raised to 0 is 1, and that's why 1 minus 1 becomes 0, and I naught into 0 becomes 0, and that's why at time instant t equal to 0, the current is going to be 0. Already we understood this in the start only. Okay, so but the current goes on increasing exponentially like this. So in this way the current goes on increasing, and but it doesn't increase up to infinity, but it soon it goes on becoming constant like this. The particular value पे वो जाके constant बनता जाता है, means it is increasing no doubt, but its rate is going to become very slow afterwards, so that it just becomes parallel and never touches the graph here. ये जो I naught वाला जो value है, ये I naught है यहाँ पे, तो इस I naught को वो कभी भी touch नहीं करता है. Okay, so this graph is just shown in this way here. So you can just understand the graph. It starts from 0, means origin, but never touches this line I naught here.
and that's why the current actually doesn't become, just wait a minute. Okay, so in this way, this will be the expression graph of current with time, no doubt. ओके बहुत सारी चीजें जो है वो हमको इस ग्राफ से ही पता चल रही है, देखो ठीक से। और अगर हम सपोज ये ग्राफ अगर ईएमएफ का भी अगर ड्रॉ करते हैं, देखो ठीक से, इफ यू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईएमएफ विथ टाइम, देन आल्सो इट विल बी सेम ओनली. So suppose this is a graph of EMF with time. Yes. ये जो है इसको हम बोल सकते हैं ग्राफ ऑफ ईएमएफ अक्रॉस द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ईएमएफ है उसका अगर हमने ये टाइम के साथ अगर ग्राफ प्लॉट किया तो इट जस्ट टेंड्स टू अप्रोच दिस ई नॉट हियर विच इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल हियर. ओके, तो ई एल जो है और ये ई आर यहाँ पे है. ठीक है, तो यहाँ पे ई आर का जो ग्राफ है इट इज वेरी सिमिलर टू द करंट ओनली in this way. But if you just see the graph of EL, that means the graph of the potential difference across the inductor here, then we can just come to know that the graph will not like this here, but slightly different. Okay, because it contains this factor here. ये जो है ये इस टाइप का फैक्टर उसके अंदर है और उसकी वजह से उसका जो ग्राफ है it starts from the point on the y-axis here somewhere, that is E naught here, but just goes on decreasing and decreases exponentially without becoming zero anywhere. Just wait. Hello. Yes. Okay, so this will be the graph of the current, sorry, EMF across the inductor actually, which will just decrease exponentially without becoming zero, and it will just start from E naught here in this way. ठीक है, तो इस ग्राफ से भी हमको कई बार सारी बातें पता चल रही है. देखो कि जब E नॉट जब EL का जो वैल्यू है वो जब E नॉट के बराबर हुआ करता है तो ER जो है वो जीरो होता है. देखो ठीक से यहाँ पे, और जैसे जैसे EL घटता जाता है तो वैसे वैसे ER जो है वो बढ़ता जा रहा है. मीन्स एज टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग वी कैन जस्ट कम टू नो दैट द EMF मतलब potential difference across the resistance goes on increasing, but the potential difference across the inductor actually goes on decreasing. तो इसका मतलब अगर हमने इन दोनों के अक्रॉस अगर एक वोल्टमीटर अगर जोड़ दिया है, यहाँ पे ये एक वोल्टमीटर सपोज है और यहाँ पे भी एक दूसरा वोल्टमीटर हमने अगर जोड़ दिया तो पता चलेगा कि यहाँ पे okay, so see here that this as the time goes on increasing we can just see the voltmeters. ये दोनों जो वोल्टमीटर यहाँ पे लगे हुए हैं उनके अंदर का रीडिंग हम देख सकते हैं आराम से कि with time the reading of this EL will just go on decreasing and the reading of this ER will actually go on increasing. And if we just keep a ammeter here, यहाँ पे एक एमीटर अगर हम लगा देंगे जो करंट मेजर करने के लिए कैपेबल है, तो उस एमीटर का जो रीडिंग है वो भी हम देख सकते हैं आराम से कि विद द टाइम द रीडिंग ऑफ एमीटर विल जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग इन दिस वे. Okay, so there is a concept of RL time constant. Okay, what is RL time constant is, see here, if you just put this value to be equal to 1, ये जो न्यूमरेटर है या पावर जो है वो अगर 1 बन जाए, when it can become 1 here, we can just see that R upon L into T will just become equal to 1 only when this T will actually become L upon R, correct है? And this is the special time after which this factor actually becomes 1.
and this time is actually called as the special time, which is called as the time constant, RL time constant. We can just denote it by capital T for the sake of our simplification. So we can just denote it by capital T, and this capital T is it can be found out by this formula L upon R, and this special time is such that at that time the current in the circuit actually becomes equal to, see, current will actually become equal to I naught into 1 minus e raised to minus 1. करेक्ट है? तो यहाँ पे e raised to minus 1 अगर हमने डाल दिया तो इसका वैल्यू पूरा सॉल्व करने के बाद, जैसा कि हम जानते हैं e का वैल्यू 2.718 होता है, तो उसका अगर हम रेस टू माइनस 1 करेंगे और वो पूरा जो भी आता है उसका अगर 1 माइनस कर देंगे तो उससे हमको एक फैक्टर मिलता है, कांस्टेंट नंबर मिलता है जो कि 0.67 के आसपास हुआ करता है. So it is 0.67 actually, and here it is going to be, sorry, it should not be E here, it should be I here. Okay, so I will actually be equal to 0.67 times of I naught, like this. So that means the RL time constant is such a time after which the current in the circuit just increases up to 0.67 times of the final current actually. क्योंकि final जो current है वो तो कभी बनने वाला ही नहीं है. यहाँ पे देखो तो इन्फिनिट टाइम के बाद ये करंट जो है वो I naught के बराबर बनेगा, करेक्ट है? So that time will never reach when the current will be full, that is I naught. But this I naught value will never be achieved by this current in this circuit here. So current अगर I naught कभी बनने वाला ही नहीं है तो फिर उसके लिए जो टाइम लगेगा वो तो इन्फिनिट रहेगा. But that's why we just define this another time constant here, which is simply the time required for the current to raise up to 0.67 times of the final maximum current that can flow through the circuit. Okay, that means the time required for the current to raise up to 67%, sorry 63 shayad, sorry 63%. Okay, it comes out to be 0.63 almost. So 63% से ये करंट बढ़ने के लिए जितना भी टाइम लगता है तो उसको हम L by R निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और उसको RL टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इस सर्किट का, जो कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर और इंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि जितना इंडक्टर ज्यादा होगा उतना ये टाइम कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ये टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा. ठीक है, तो जितना कम से कम रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे उतना ज्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा इस करंट को 63% से तक राइज होने के लिए. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ RL टाइम कांस्टेंट. ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. सी, वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था ऑलरेडी, देखो ये EL जो होता है ना वो एक्चुअली L इंटू डी के बराबर हुआ करता है. ये देख सकते हो आराम से, दिस EL इज एक्चुअली L इंटू डी, राइट? इफ यू जस्ट यूज इट हियर देन वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस EL कैन बी रिटन टू बी L इंटू DI/dt. ओके, अभी इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन पता चलेगा, ग्राफिकल इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? देखो कि EL is going to be actually the L times of the slope of, okay, slope of tangent in case of IT graph. Okay, IT का जो ग्राफ बना हुआ है, देखो यहाँ पे I और T के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है, ये फर्स्ट वाला ग्राफ देख रहे हो. अभी इस ग्राफ के अंदर का अगर कोई भी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट अगर चूज करते हो, ये सपोज पर्टिकुलर पॉइंट मैंने चूज किया, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, जैसे देखो ये मैंने सपोज टेंजेंट ड्रॉ किया इधर, दिस इज सपोज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट हियर. ओके, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, तो उस स्लोप को अगर हमने L से अगर मल्टीप्लाई कर दिया ना, L से, L मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज दिस कैपिटल L, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल हियर. सो अगर उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे हमको क्या मिलेगा पता है? उससे हमको मिलेगा एक्चुअली उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर का, ये देखो ये उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर का EL का वैल्यू मिलेगा. ये देखो ठीक से, ये जो द वैल्यू ऑफ EL हियर कैन एक्चुअली बी ऑब्टेन्ड, ये इस पॉइंट पे EL का जो वैल्यू होगा वो एक्चुअली हमको कैसे मिलेगा,
by finding out the slope of tangent of this graph. अभी slope कैसे निकालते हैं तुमको पता है already. Slope can be found out in two ways, either by finding the angle made by this line with this x-axis and finding the tan theta of that, or you can also find out the slope by finding out the 2 points. तो ये 2 points अगर हमको दिए हुए हैं इस ग्राफ के ऊपर के, ये एक सपोज पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों के अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम यूज करके इस पूरे ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं टेंजेंट का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. एंड इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस स्लोप बाय l, क्योंकि स्लोप मतलब ही क्या रहने वाला है, वो di/dt रहने वाला है एक्चुअली. सो इफ यू जस्ट फाइंड आउट द स्लोप and multiply it by L, that is the self inductance of the coil, then we can be able to get the EMF across this coil at that instant particularly. तो ये इसका EL का जो वैल्यू है वो हमको इस तरह से मिल जाएगा. ये जो हाइट है यहाँ पे वो एक्चुअली EL रहेगा, जो कि इंस्टेंटेनियस EMF, उस इंस्टेंट का EMF रहेगा कॉइल के अंदर, जो हमने इस स्लोप को, जो कि tan थीटा फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है या y2 माइनस y1 फॉर्मूला से निकाला जा सकता है या डेरिवेटिव से भी निकाला जा सकता है, obviously, no doubt. And once we get the slope, we can multiply it by L and we can get the instantaneous value of the EMF at that instant in the inductor. इस इंडक्टर के अंदर उस समय कितना EMF होगा वो हमको उसमें से पता चल जाएगा. ओके, और अगर EL पता चल गया तो ER निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि E0 is actually equal to EL plus ER, करेक्ट है. ये हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो इससे यूज करके ER जो है वो एक्चुअली E0 माइनस EL होगा, वो तो हमको पता ही है ऑलरेडी. तो इस तरह से हमको ये ER भी मिल जाएगा आराम से, नो डाउट. और एक बात यहाँ पे, ये इक्वेशन अगर हमने इंटीग्रल फॉर्म में अगर लिखा, देखो ठीक से, ये इक्वेशन को अगर हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिखने के लिए ट्राई करते हैं तो वी कैन जस्ट राइट दिस एज EL इज एक्चुअली इक्वल टू L इंटू di/dt. But if we just write down it as an integral form, then we can just write it as di is equal to, ये L नीचे चला जाएगा, dt उस तरफ चला जाएगा, और हमको मिलेगा सिंपली di is equal to EL upon L into dt, correct है. And if we just integrate on both sides, then we can be able to get this current to be simply equal to integration of 1 upon L is constant out and integration of this EL into dt. अभी यहाँ पे हमको ये समझना है कि what does this integral means. इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, करेक्ट है. सो इफ यू जस्ट फोकस ऑन दिस इंटीग्रल दैट इज एरिया अंडर द कर्व, देन वी कैन जस्ट गेट टू नो दैट, सी हियर, अगर यहाँ पे जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स. Yes, suppose now we have the area under this curve. तो अगर सपोज ये EL वाला जो ग्राफ है, तो उसके अंदर का अगर हम एरिया कंसिडर करते हैं, जीरो से सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t तक का, मान लो यहाँ तक का जो एरिया है वो अगर सपोज हम कंसिडर करते हैं, सो दिस एरिया विल एक्चुअली गिव अस द करंट एट दैट इंस्टेंट. ये पूरा अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा पता है, we'll just get the current at that instant. मतलब ये करंट का जो वैल्यू है उस समय का वो हमको आराम से मिल जाएगा. That means the current means the height at that instant. ठीक है, उस समय करंट का वैल्यू कितना होगा तो वो हमको एक्चुअली इस एरिया निकाल के मिल जाएगा. ठीक है, so this area actually will be the current at that time. And since it is a series combination, the current will be same whether it is in the inductor or resistance, no doubt current will be the same, but we can just find out the area under this curve and just get to know what is the current in this case. Getting is, तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. Okay, yes, okay, so let us see the next topic in this chapter, that is about the displacement current. Okay, displacement current. And
इम्प्रूवमेंट इन एम्पियर्स लॉ. ओके, एम्पियर्स लॉ के अंदर का जो इम्प्रूवमेंट है तो वो हमको अभी यहाँ पे देखना है. Yes, what is displacement current and what is Ampere's law actually? See here, Ampere's law simply tells us that if suppose there is a current carrying conductor here, समझो यहाँ पे एक current carrying conductor है जिसमें से current flow हो रहा है from left to right like this, suppose here. Okay, and if we just take a loop like this, अगर इसमें यहाँ पे हमने एक loop ले लिया, ठीक है, इस तरह से, तो होगा क्या ना कि ये करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ये तो सभी जानते हैं ऑलरेडी कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कुलेटिंग लाइंस इन दिस वे. तो ये सर्कुलेटिंग लाइंस जो है, दीज लाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द करंट हियर. तो अगर यहाँ पे आई इतना करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में इसके करंट के अराउंड पे पैदा हो जाएगा, बिल्कुल नो डाउट. लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्चुअली डिफरेंट एंड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स हियर. तो यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसका डायरेक्शन भी अलग अलग होगा और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा. If we just consider a small element here at this point here, then we can just draw the magnetic field at this point to be directed like this. तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ डायरेक्टेड है सपोज, और उस एलिमेंट का जो लेंथ है तो वो इस तरफ है सपोज. ठीक है, तो इन दोनों का हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना होगा. उनके बीच में अगर हमने मान लिया कि एंगल थीटा है सपोज, तो उस केस में उस थीटा का थीटा के हिसाब से हमको इस मैग्नेटिक फील्ड को और एलिमेंट का जो डायरेक्शन है डीएल सपोज यहाँ पे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को या तो फिर डीएल बार को रिजॉल्व करना होगा. और अगर उसका एक कंपोनेंट हम अगर कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो दैट कंपोनेंट विल एक्चुअली बी कंसिडर्ड एज डीएल कॉस थीटा. करेक्ट है, तो ये जो कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं आराम से डीएल इंटू कॉस थीटा, राइट. And if you just go on taking the product of this magnetic induction and the component of the length of element along the magnetic field here, then we can just get to know that the integration of the product of b bar dot dl cos theta at every point here. तो ये हमको हर एक पॉइंट पे करना होगा, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर का मैग्नेटिक इंडक्शन और उस पॉइंट के ऊपर का लेंथ, जो एलिमेंट का जो लेंथ है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमको कैलकुलेट करते जाना है. एंड वी हैव टू डू इट एट ऑल द पॉइंट्स लाइक दिस. तो यहाँ पे एक सपोज पर्टिकुलर पॉइंट है, वहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन सपोज इस डायरेक्शन में है, लेकिन करंट एलिमेंट जो है वो सपोज इस डायरेक्शन में है. उनके बीच में अगर थीटा इतना एंगल है तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज डीएल बार एंड दिस इज एक्चुअली बी बार. सो वी हैव टू रिजॉल्व दिस डीएल बार and consider its components along the B bar. Or even we can just do another thing. We can just resolve this B bar and consider its component along DL bar, which can also be called as B cos theta. And we have to multiply this B cos theta with DL bar and consider the product of that. So if we just consider the product of B cos theta with DL bar and take it over the whole closed interval or closed loop here, then it happens to be actually equal to mu naught times of the summation of all currents flowing through that loop. This is actually going to be the Ampere's law here. Okay, so this is the concept of Ampere's law. But as we can just see that there is a discrepancy in Ampere's law. Ampere's law के अंदर एक सिंपल सा डिक्रिपेंसी या एक फ्लॉ हमको नजर आता है, एक कमतरता या उसको कमजोरी हमको मिलता है, जो कि the concept of displacement current जो है वो इंट्रोड्यूस करता है. If you consider this capacitor here, सिंपल सा एक कैपेसिटर कंसिडर कर लो यहाँ पे. सपोज ये कैपेसिटर है, okay, and suppose this whole capacitor is just connected to a battery with the help of a wire. This is suppose a battery.
Okay, then we can just see that suppose this capacitor consists of the parallel plates like this. This is the positive plate and there is a negative plate here. Okay, so what happens here is, see, as soon as the current is switched on, okay, जैसे ही हमने यहाँ पे suppose एक switch बना के रखा है जो इस करंट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए काम में आएगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हम ये स्विच ऑन करते हैं, so as soon as this current is switched on, and the charges will just start flowing and the electric field will just go on building up in this space between the two plates of this capacitor. So far as this electric field is building up, what happens is there is a magnetic field produced here. तो यहाँ पे अगर एक मैग्नेटिक नीडल अगर हमने रखा तो वो भी डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे बाहर में, इधर सपोज यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा तो वो भी डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमने मैग्नेटिक नीडल रखा तो वो भी डिफ्लेक्ट होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट flowing here. But at the same time, if we just see, there is a magnetic needle kept in the space between the two plates of this capacitor here, then that will also deflect, even if there is no current flowing here. ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लो होने वाला करंट तो है नहीं, फिर भी ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट क्यों होता है? What is the source of magnetic field produced here? So it can be understood that the electric field in the space here is changing actually. Okay, तो इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है, और ये चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ये एम्पियर्स लॉ के अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि हमको ये समझना होता है कि द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, whenever the electric field actually changes in some region, that change in electric field actually is equivalent to a current flowing here. Okay, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना मतलब एक तरह से एक करंट का फ्लो होने के बराबर हो जाता है, और उस करंट को एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है. So this is the concept of displacement current. Remember, what is displacement current? The current which is equivalent to the changing electric field in some region. ठीक है, so इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना एक करंट के इक्विवेलेंट समझा जाता है, क्योंकि किसी भी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता हुआ दिखता है, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से पैदा होता है, सेम वैसे ही यहाँ पे स्पेस में भी बिना करंट होने के बावजूद भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता हुआ दिखता है. और ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक करंट एज्यूम करना पड़ता है जो कि उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम इन द वायर हियर, and this current is actually exactly same as this current flowing in the wire here. This current flowing in the wire is called as conduction current. We can call it denoted by IC, and here the current flowing through this space, which is equivalent to the rate of change of electric flux. Electric flux actually is called as the displacement current, and this displacement current is exactly same as the conduction current here. Okay, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. तो इसलिए फिर यहाँ पे एम्पियर्स लॉ जो है तो उसका स्टेटमेंट हम थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्पियर्स लॉ कैसा लिखा जाता है, इट इज डिनोटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी बार एंड डीएल बार, जिसको कि लाइन इंटीग्रल भी कहा जाता है. इट इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द समेशन ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग थ्रू दैट लूप. सो द मॉडिफिकेशन हियर इज दैट the total current here is actually going to be the conduction current plus displacement current. Remember, तो यहाँ पे करंट जो जिसकी हम बात करते हैं, जब हम टोटल करंट बोलते हैं तो उसमें हमको कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों यहाँ पे इंक्लूड करने हैं. So the modified form of Ampere's law can be written in this way. So the line integral of magnetic induction taken over any closed loop is always equal to the mu naught times of the summation of all currents, total currents, including conduction current and displacement current as well. Okay, तो ये जो है this is actually called as the modified Ampere's law. Okay, and if you just want to find out the expression for this displacement current here,
then we already know that this displacement current or any current in general is actually equal to the rate of flow of charge. So we can just have this ID to be simply equal to dq by dt, correct hai? Dq by dt. But as we know already in case of a capacitor that the charge is actually equal to charge is equal to capacity into potential difference, correct hai? Or just see this charge is actually equal to sigma, that is surface charge density on the plate of the capacitor into area. You can just write this as it is here. And if we just put this value here, then we can just get this ID to be simply equal to what? D by dt of Q, where Q stands for sigma into A, which can be replaced for that here. So we can just get this as sigma into A, correct? Hai? But as we know that sigma, that is the surface charge density, is connected with electric intensity of the electric field in the space between the two plates. That is E is equal to क्या होता है? Sigma upon epsilon naught हुआ करता है. ये हमने already electrostatics के अंदर देखा है. So that means sigma can actually be written to be epsilon naught into E, right? So if we just put this value of sigma here in this equation, then we can just get the another value of ID, that is d by dt of this sigma will be replaced by epsilon naught into E into A here, correct? Hai? But as we again know that this electric intensity into area is actually the flux, that is electric flux, we can just say phi E, we can just denote it by. So if we just put it here, then we can just be able to get this current, displacement current, to be simply equal to just epsilon naught is a constant, can be taken outside. And if we just take this epsilon naught out, then what we are left inside? Simply the product of E and A. But as we can just see in here that E into A is nothing but phi E. That is the rate of change of electric flux actually. Phi E यहाँ पे क्या है? Electric flux है. तो अगर वो हमने यहाँ पे डाल दिया तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा आराम से ID, that is the displacement current is actually going to be epsilon naught times E. A के बदले अगर phi डाल दिया तो हमको मिलेगा d phi E by dt, correct है? So this is the value of displacement current which has to be put here in Ampere's law, so that this Ampere's law just gets modified once again so as to remain it as the line integral of magnetic induction taken over any closed loop is actually equal to mu naught times of summation of all currents, where IC stands for the conduction current and ID is going to be the displacement current, which can also be replaced by epsilon naught into d phi E by dt, where d phi E by dt stands for the rate of change of electric flux in the space. Okay, so this is actually called as the modified Ampere's law, and this is actually called as the equation for the displacement current, which depends on the rate of change of electric flux linked with that coil. Okay, yes, so in this way we can just understand the concept of Ampere's law and its discrepancy and its modification. Okay, yes, and if suppose there is no conduction current present in the space, then we can just modify the Ampere's law in this way. अगर वहाँ पे current है ही नहीं तो उस केस में हमको क्या मिलेगा? So the simply line integral of magnetic induction will actually be equal to mu naught into conduction current तो है ही नहीं, so वहाँ पे डायरेक्ट ये जीरो हो जाएगा, conduction current जीरो हो जाएगा और डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई होगा epsilon naught के साथ, and this epsilon naught will be multiplied with d phi E by dt in this way here. So this is the d phi E by dt. D phi E by dt मतलब क्या है यहाँ पे? It is the rate of change of electric flux in the space. Okay, so remember, even we can just write it in terms of the rate of change of electric field also, or electric intensity also, by using the formula or relationship between electric flux and electric intensity here.
तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है अगर यहाँ पे हम डाल दिया तो उसमें से क्या होगा, एरिया जो है वो कांस्टेंट है, so it can also be taken out and we can just write this as mu naught into epsilon naught into A, that is area, into dE by dt, where dE by dt stands for the rate of change of electric field or electric intensity in the space here, which is going to be equal to the line integral of magnetic induction here. Okay, so this is actually all about the Ampere's law and its modifications. Okay, so that's all about this chapter here. So we are finished with the theory topics in this chapter. Let's continue with the numericals or MCQs in the next lecture. Okay, तो next lecture में हम इसके ऊपर के MCQs ही देखने वाले हैं. Okay, so I will expect that all of you will just solve at least 20 to 25 MCQs on this chapter and be prepared with the doubts in the next lecture. Okay, तो ठीक है. और जैसे कि मैंने कल और परसों भी बात की थी